पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्यूब, उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे हमने ग्राफ देखे थे जो कि ऑड फंक्शन थे, जो कि जिसमें कोई सिमेट्रिक था, कोई सिमेट्रिक टू द अपोजिट साइड, अपोजिट क्वाड्रेंट था। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशनल एक्सपोनेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले में देखे थे वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, और इसमें देखेंगे रेशनल एक्सपोनेंट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर। दूसरे में देखेंगे रेशनल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंट फंक्शन। उसके इसमें देखेंगे द फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे दूसरे पॉलिनोमियल को, उसी को हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। इसमें फंक्शन obtained by dividing polynomial by another polynomial is called rational function। तो एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करे उसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x एंड हियर q ऑफ x, वेयर q ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक दूसरा पॉलिनोमियल जो जीरो नहीं होना चाहिए। और इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन बिलोंग्स टू r माइनस x, q ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसमें ये बोलना चाहता है कि डोमेन जो है इसमें r माइनस मतलब जो हमारा रियल नंबर है उसमें हम इसको माइनस कर देंगे, मतलब 0 नहीं आ सकता है उसमें। इट मीन्स दैट x does not q of x does not equal to 0। इट मीन्स दैट आफ्टर लिविंग दिस, इसको छोड़ के जितना सारा एलिमेंट है सारा बिलोंग करेगा इसमें। सो डोमेन बिलोंग्स टू R except those points for which denominator is equal to 0। ये सब एक्सेप्ट इसको छोड़ के, डिनोमिनेटर बिलोंग्स इक्वल टू 0, इसको छोड़ के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे इसमें। तो अब ग्राफ देखेंगे रेशनल नंबर का ग्राफ कैसा होता है। सिंपल ग्राफ वी विल सी। तो हम ग्राफ देखेंगे। अब रेशनल फंक्शन का ग्राफ देखेंगे हम लोग। ग्राफ ऑफ सम सिंपल रेशनल फंक्शन। तो पहले में देखेंगे ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। f ऑफ x इज y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ देखेंगे हम। ओके, इस फंक्शन का ग्राफ देखेंगे हम। तो इस फंक्शन के ग्राफ पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं। अ फंक्शन defined by f of x is equal to 1 by x is called the reciprocal function or rectangular हाइपरबोला। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे ग्राफ के माध्यम से। which
coordinate axis as asymptotic which corresponding axis as asymptotic, the domain and range. This is very important part. Domain and range of f of x is equal to 1 by x is r minus 0 को छोड़ के, it will not touch 0. 0 को छोड़ के मतलब अभी ग्राफ के माध्यम से देखेंगे हम. Since f of x is odd function, so its graph is symmetrical about opposite quadrant. It is symmetrical about opposite quadrant. पिछले लेक्चर में हमने देखा था f of x is equal to x क्यूब का ग्राफ कैसा होता था. f of x इसी का होता था symmetric about opposite quadrant होता था. उसमें भी f of x is equal to x क्यूब का ग्राफ क्या होता था, f of x is equal to x क्यूब का ग्राफ क्या होता था, सेम होता था. तो हम लोग ग्राफ के थ्रू देखेंगे ये सिमेट्रिक थ्रू अपोजिट क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं. यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट क्यों बोल रहा है, फिर से डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे ग्राफ के थ्रू. कम टू द नेक्स्ट. सो f of x is equal to 1 by x का ग्राफ. It will never touch its origin. Why it will never touch this origin? Because here we have discussed earlier, we have discussed that f of x minus singleton 0. It will not include 0. This will not be 0. This will here x will not be equal to 0. That's why if you will put here 0, then this both will become 0 0. But this is not satisfying this equation. So here this point 0 0, it will not intersect. After leaving this point, after 0 को छोड़ के हम कुछ भी रखेंगे. f of x is equal to 1 by suppose 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, like this. It will go nearly when you will see that if you will apply limit, what you will apply, if you will apply limit, suppose the limit f of x tends to infinity, then you will see that when you will put the value here, it will one point it will become near, it will not become 0, it will come near to 0. Okay, it will come near to 0, but it will not become 0. That's why this point is not इसीलिए ये point touch नहीं कर रहा है. It will come near to the 0. This point will come here, 0 को छोड़ के इधर चला जाएगा. इसीलिए सपोज यहाँ पे हम 1 1 ले लिए हैं. लाइकवाइज 1 1 एक पॉइंट है, यहाँ पे -1 और -1 ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कर्व मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से आ रहा है, फिर इसके जस्ट मतलब 0 को छोड़ के ऐसे छू के निकल जाएगा. अब क्यों छू के निकल जाएगा, यहाँ पे सी सपोज यू विल पुट द वैल्यू हियर, सपोज we'll put the value 1 by 2, it will here, suppose here it is 1, here it is 1 by 2, here it is 1, here it is suppose here it is 1 by 4, like this, it will come downward, and one point it will come, it will not touch 0, but it will just go, it will come here, and after that it will go there. Okay, it will never touch 0. In 1 by x, f of x is equal to 1 by x graph, it will keep in mind that it will never touch 0.
Okay, same why we say it is symmetric about opposite quadrant. Why it is symmetric about, same happen here also. Same, just suppose here it is minus infinity. When we'll put here x tends to minus infinity, then what will happen? This will also come here. Suppose here it will come near to 0. When you will put here 1 by x, it will also come here. It will not touch 0, but it will near to the 0. Okay, 0 ke just pass आएगा. It will not never touch 0. Same will happen here also. It will not touch 0 here. अब यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है. It will not touch 0. That's why we say that it is symmetric about opposite quadrant. मतलब यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे मान लो 2 2 है, 2 2 रहेगा तो यहाँ पे -2 2 रहेगा, -2 2. यहाँ पे 3 3 है तो यहाँ पे -3 ऐसे. जस्ट अपोजिट, जस्ट इट इज अपोजिट क्वाड्रेंट ना, जस्ट सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट. इसीलिए हम बोलते हैं इट इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट. तो दूसरा ग्राफ देखते हैं. सेकंड ग्राफ ऑफ f of x is equal to 1 by x square. 1 by x square में क्या होगा? Here f of x is equal to 1 by x square is an even function. इवन फंक्शन में हम बताए थे कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा. पिछले लेक्चर में हम बताए थे इवन में क्या होगा. सपोज 1 by f x is equal to x में क्या होता, क्या x स्क्वायर में क्या होता था? इट इज symmetrical about y axis. It is symmetrical about x. Same here also. So its graph is symmetrical about y axis. ये हो गया इसका. 1 by x स्क्वायर इज इवन फंक्शन. ये इवन फंक्शन है और इसको स्क्वायर फंक्शन भी बोलते हैं, और इसको स्क्वायर फंक्शन भी बोलते हैं, और f of x is equal to 1 by x square is an even function. So its graph is symmetric about y axis. अब ये symmetric about y axis कैसे होगा? Let's see. पहले इसका डोमेन डिस्कस कर लेते हैं. इसका डोमेन 1 by x का डोमेन क्या होगा? Domain of f of x is r minus singleton 0. 0 को छोड़ के r में जितने 0 को छोड़ के रियल नंबर में जितने टर्म आते हैं वो हमारा क्या होगा? डोमेन होगा. और रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? 0 से इंफिनिटी होगा. ओके, 0 से इंफिनिटी होगा. 0 से इंफिनिटी में जितने सारे टर्म आते हैं तो सारे के सारे होंगे. अब सपोज here we see that f of x is equal to 1 by x square if y tends, suppose here we will write y is equal to 1 by x square. So suppose here y tends to infinity, then what will be the value of this? As y tends to infinity कब होगा? This value of y will tends to infinity कब होगा? When limit x tends to 0 positive f of x or limit x tends to 0 negative f of x. ये दोनों जब ये दोनों x tends to 0 पॉजिटिव होगा और यहाँ पे x tends to 0 नेगेटिव, ये जब दोनों tends to 0 पॉजिटिव and tends to 0 नेगेटिव होगा, तब यहाँ हमारा वैल्यू क्या होगा? y tends to infinity. अब y tends to 0 कब होगा? ये जो वैल्यू y 0 कब होगा? When, सिंपल सवाल, when x tends to infinity, when it will not be 0. Okay, it will not equal to 0. This is totally wrong. Y tends to 0. Y tends to 0. It will tends to 0, but it will not 0. Okay, y will not equal to 0. Y tends to 0 when x tends to infinity. X tends to infinity when the, see here,
f of x is equal to 1 by x square when the value of this x, when the value of this x tends to infinity, when the value of this x tends to infinity, when you will, this will tends to infinity, the 1 by, suppose large, one of the largest term, suppose largest means you can't even imagine also, then you will, when you will 1 divided with one of the largest term, then it will come nearly to 0, it will nearly tends to 0. Okay, this is what it is saying that, okay, here we will f of x is equal to y. We can say that f of x is equal to y, here y tends to infinity, or when y is not equal to, here y is not equal to 0, when x tends to infinity. Y tends to infinity, y tends to 0 means what? When x tends to infinity, then it will be y tends to 0. So f of x is equal to 1 by x square. तो 1 by x square का ग्राफ क्या होता है? It will not touch this. Okay, sorry. It will not touch this. Y, x. So y is symmetric about y axis. Whatever value we will put here, suppose f of 1 is equal to 1, then here it will be 1. Here it will, when you will put here, suppose anything 1, or here it will be minus 1. Suppose here this, because this is negative, this is positive, this is positive, this is negative. We know that. Then when you, here it will be 1, then here it will be minus 1. It is symmetric. It is symmetrical about y-axis. Why it is symmetrical about y-axis? Because when you will see that the value of x here, value of x for this both point is same. Here is 1 and here is 1. Whatever point will be here, the point of x will be same, because this is positive, and here will also positive, and here will also the point for this both y will always same. Okay, y will always same for both, for this graph also, and for this line also, for both line the value of y will be same. That's why it is symmetric about y axis. It is not symmetrical about x axis, because we see that it is just opposite. Here it is 1 and here it is minus 1. Here it is 1, here it is minus 1. So it is not symmetrical about x axis. It is skew symmetrical about x axis, you can say. It is skew symmetrical about x axis. It is skew symmetrical about x axis, but it is not symmetrical about x axis. So next we will see the graph of 1 by x to the power 2n, where n belongs to natural number. Next we will see the graph of f of x is equal to 1 by x to the power 2n. Next we will see the graph of f of x is equal to 1 by x to the power 2n, where n belongs to natural number. We observe that the function f of x is equal to 1 by x to the power 2n. When we will see that previous lecture, we said that here x to the power 2n is even function. Okay,
is even function. Here also it is even function. 1 by x to the power 2n is an even function. So its graph its graph is symmetrical about y-axis. It is symmetrical about y-axis. Same when also when y tends to infinity, then limit x tends to 0 positive f of x, or limit x tends to 0 negative f of x. When this x will tends to 0 positive or x will tends to 0 negative, it will be when y tends to infinity, or both are dependent. When this tends to 0 positive, y tends to infinity, or when y tends to infinity, it will be limit x tends to 0 positive or x tends to 0 negative. Then values of y decreases as the value of x increases. Here what we have seen, that when the value of x decreases as the value of x increases. Suppose here we will see the f of x is equal to 1 by x. Here the value of x will increase when, suppose 1 by x square. When the value of x will increase, then it is in 1 by x square. It is in by form. So then the f of x is equal to y. It will be decrease. Value of y will be decrease. When x will increase, then value of y will be decreasing. So in this, how we will plot this graph of 1 by x to the power 2n. 1 by x to the power 2n means what? Even function. 1 by x square, 1 by x to the power 4, 1 by x to the power 6, like this. It will be 1 by x to the power 2n. So we will plot the graph of 1 by x 1 by x to the power 2n. The graph of this will be, it will just same like that. It will be like this. Again this will go here and it will come here. Here this graph of y is equal to 1 by x to the power 4. This is graph is 1 by x square, like this. It will like this it will go. Suppose here like this. As we have seen that y tends to 0 means what? When y tends to 0, when it will happen, when limit x tends to 0 positive f of x, or limit x tends to negative f of x. Same limit x tends to 0 infinity, x tends to plus infinity, or x tends to minus infinity. Just this पहले इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. When x will increase, what will happen? When y will decrease, when x will increase, this will happen. When x will decrease, then this will happen. Same we have discussed. The next we will see the graph of 1 by x to the power 2n minus 1, which is odd function. So let us start with next page. So the graph of f of x is equal to 1 by x to the power 2n minus 1, where n belongs to natural number. Then here we will see that 1 by x cube, 1 by x to the power 5, 1 by x to the power 7, like this. It is odd. Here this function
is odd function and its graph is symmetrical in opposite quadrant. Previous video we have seen that the graph of x to the power 2n minus 1 is same. It's odd function. This graph is odd function also. It is symmetric about opposite quadrant also. So we will plot the graph of 1 by x to the power 2n minus 1. So suppose before plotting graph, let's see what will happen when what will happen when x tends to 0 positive or x tends to 0 negative. When limit x tends to 0 positive f of x, when limit tends to x to 0 positive, then the value of y will be for infinity. When limit x tends to 0 negative f of x, then value of y will be minus infinity. So let's plot the graph of this. This is the graph. Like this is the 1 by x cube. Same like this. When the value of here it will be 1 1, then the value of here it will be minus 1 minus 1. Same wise, when the value of this both will be just minus 2, here it will be 2 2. Same wise like this 2 2. Here it will minus 2. So it is symmetric. It is symmetric about. This is why we say that it is symmetric about opposite quadrant. इसीलिए हम बोलते हैं कि ये symmetric होता है opposite quadrant में. ये first हो गया, ये second हो गया, ये third हो गया, ये fourth हो गया. This is just opposite about. It is symmetric in opposite quadrant. So let's. तो अब हम स्टार्ट करेंगे इरेशनल फंक्शन. इरेशनल फंक्शन क्या होता है? द ग्राफिकल फंक्शन कंटेनिंग टर्म हैविंग नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर ऑफ एक्स और एक्स आर कॉल्ड इरेशनल फंक्शन. इरेशनल फंक्शन उसे बोलते हैं जो कंटेन करे नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर को. जो क्या करे? जो नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर को कंटेन करे उसे हम कहते हैं इरेशनल फंक्शन. इरेशनल फंक्शन कहते हैं. और आगे देखेंगे ग्राफ, जैसे ग्राफ ऑफ सम सिंपल इरेशनल फंक्शन, जैसे कि f of x इज इक्वल टू रूट एक्स क्यूब रूट एक्स, ऐसे देखेंगे x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/5, ऐसे देखेंगे ग्राफ. पहले देखते हैं f of x इज इक्वल टू रूट एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम. वी नो दैट. तो इसका डोमेन और रेंज दोनों डिस्कस कर लेते हैं. इसका डोमेन ऑन रेंज, डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा f of x belongs to, डोमेन ऑफ f of x belongs to r positive union 0. It means that r positive term means 1, 1.5, 1.3, like this. All r positive terms, r positive मतलब रेशनल नंबर में, सॉरी रियल नंबर में सारे के सारे जो जितने पॉजिटिव टर्म है वो सारा कंटेन करेगा जीरो को लेकर के. एंड जीरो बोथ मतलब जीरो उसमें कंटेन रहेगा. इट और वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो. इट विल कंटेन जीरो टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. इट विल कंटेन जीरो. इसके साइन मतलब क्या होगा? ये इंक्लूड करेगा, जीरो को इंक्लूड करेगा. ठीक है, जीरो को इंक्लूड लेके इंफिनिटी तक. इंफिनिटी में ये ब्रैकेट लगता है हमेशा. और इसका रेंज क्या होगा? नाउ वी विल डिस्कस रेंज. इसका रेंज क्या होगा? रेंज होगा आर पॉजिटिव यूनियन सेम. रेंज विल बी आल्सो सेम, और वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो. इसका क्या होगा? डोमेन ऑन रेंज दोनों सेम होगा.
तो अब देखेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ को, ग्राफ कैसा देखने में है, उसके बाद प्लॉट करेंगे x³ x⁻1/3 का ग्राफ, उसके बाद प्लॉट करेंगे, आगे प्लॉट करते जाएंगे 5 का 6 का, लाइक दिस विल प्लॉट। तो देखते हैं एक अगले पेज से। नाउ ग्राफ ऑफ x⁻1/2, we can write like this, y is equal to x⁻1/2। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, y² इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो y² का ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, ठीक है। और इसका ये वाला, ये तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, y इज इक्वल टू x⁻1/2 मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू x⁻1/2 का ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा, जीरो को टच करेगा, उसके बाद ये स्मूथली ऊपर की तरफ जाएगा। y इज इक्वल टू √x का ग्राफ है ये। और सपोज हियर वी विल टेक 1.11, अब इसमें पुट करेंगे 1, तो क्या होगा, 1⁻1/2, 1 का पावर कुछ भी हो वो भी 1 ही होगा, मीन्स x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो 1 का ग्राफ यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लॉट करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, सपोज यहाँ पे 1.2 ले लिए, तो f ऑफ 1.2 इज इक्वल टू 1.2 का मीन्स √1/2, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी कहीं यहाँ लाई करेगा, फिर उसके बाद नंबर लेंगे तो यहाँ पे कुछ लाई करेगा, फिर ग्राफ ऐसे इस फॉर्म में हो जाएगा। तो वैसे ये सपोज सिंपल सा अगर स्क्वायर का देखना है, हमें स्क्वायर का देखना है, y इज इक्वल टू x⁻, ऐसे लिखा है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, y² इज इक्वल टू x, y इक्वल स्क्वायर के ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है। और सपोज ऐसे ही करेंगे, अगर कुछ और रहेगा वो भी इधर आएगा, तो ये भी कुछ ऐसे मतलब क्यूब का ऐसे हो जाएगा। उसको आगे देखेंगे ये सारा चीज, उसको कुछ नोट लगा लेते हैं इसके x⁻1/2 के ग्राफ पे। नोट, if f of x is equal to x⁻n, f of x is equal to x⁻n and g of x is equal to x⁻1/n, then f of x and g of x are inverse of each other। क्या होगा, ये इनवर्स होगा एक दूसरे के, क्या होगा, ये इनवर्स होगा। एक सपोज f of x is equal to x⁻n, सपोज f of x is equal to x⁻n और g of x is equal to x⁻1/n, तो क्या होगा, ये एक दूसरे का इनवर्स होगा, एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। Therefore f of x is equal to x⁻n and g of x is equal to x⁻1/n is the mirror image about y is equal to x, y is equal to x, ये क्या होगा, x is equal to y का मिरर इमेज होगा। सपोज यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, तो ये वाला जस्ट इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इसका भी इमेज ऐसे ही था, और स्क्वायर कैसे था, ऐसे था, उसका मिरर इमेज यहाँ पे और यहाँ पे दोनों मिरर इमेज था। फिर इसका नीचे वाला देखे तो नीचे वाला का भी सेम होगा, फिर इसका मिरर इमेज ये है, फिर इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ये होगा। यही बोलना चाहता है यार, एक दूसरे का इनवर्स होगा। उसके बाद f of x और g of x क्या होगा, मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू x, मिरर इमेज इक्वल टू y इज इक्वल टू x का मिरर इमेज होगा। अब देखेंगे अगला देखेंगे, सपोज दूसरा ले लेते हैं, ये दूसरा g of f of x इज इक्वल टू पहला हो गया, ये पहला हो गया, अब ये दूसरा लेते हैं, ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू x³। अब x³ का ग्राफ होगा क्या होगा, पहले इसका डोमेन और रेंज दोनों डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन और रेंज क्या होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, f of x इज इक्वल टू r, इसका डोमेन r होगा, और रेंज क्या होगा, f of x इज इक्वल टू r, इसका भी रेंज क्या होगा, r होगा। इसका 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे इसका कहाँ गया, यहाँ पे पिछले में देखे थे हम, इसका रेंज कहाँ होता है, 0 से इंफिनिटी तक होता है,
जीरो से इंफिनिटी तक, और डोमेन भी इसका जीरो से इंफिनिटी तक होता है, जीरो से इंफिनिटी तक। यहाँ पे जीरो से इंफिनिटी तक डोमेन और रेंज दोनों इसका जीरो से इंफिनिटी तक होगा। किसका? एक्स टू द पावर 1/2 का, रूट एक्स का। अब क्यूब रूट का देखेंगे, क्यूब रूट का क्या होगा डोमेन। तो इसका डोमेन होगा आर, पूरे आर लाई करेगा, इसका भी डोमेन पूरे आर में लाई करेंगे, ठीक है। डोमेन और तो इसके ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। सपोज ये ऐसा, यहाँ से कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, यहाँ पे जीरो जीरो से इंटरसेक्ट करेगा। व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो, जीरो इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, देन जीरो जीरो। तो जीरो जीरो से हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, सारे के सारे पॉइंट यहाँ जीरो से इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हियर वी विल टेक -1, हियर वी विल टेक 1 1 -1 -1, सेम लाइक दिस। तो ये कैसा बन रहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा बन रहा है। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है कि ये सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट है? तो हम बता दें, इट इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट जस्ट वाई एक्सिस, इट इज सिमेट्रिक अबाउट सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। तो हम देखेंगे, और इसका ग्राफ ऐसा होगा। सपोज ये तो हो गया एक्स क्यूब का ग्राफ, यहाँ पे एक क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, तो और इसका सपोज ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा था हमारा, ये कुछ ऐसा था, ऐसे था। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू, इट इज जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे स्क्वायर एक्स टू द पावर n और g ऑफ x इज इक्वल टू 1/n। यहाँ पे क्या लिखे हैं, जस्ट अपोजिट, इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ ईच अदर, इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज तो बन रहा है, इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, और इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, और इट इज, ये दोनों जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे देखो ग्राफ कुछ ऐसे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ के जस्ट अपोजिट, मतलब एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और एक अपोजिट वाला, इनवर्स वाला, और एक ऐसे जा रहा है, ये इनवर्स वाला हो गया, और सब सॉरी एक्स टू द पावर 1/3 हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया। जस्ट इनवर्स वाला कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा है, मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू x एक्सिस एंड इट इज g f of x and g of x आर इनवर्स इमेज ऑफ ईच अदर, इट इज इनवर्स इमेज ऑफ ईच अदर। यहाँ पे भी शो हो गया कि ये वाला ऐसे, सपोज इट इज, सपोज अगर हम इसका देखें, अगर इसका एक्स स्क्वायर ग्राफ देखें, तो ये वाला ऐसे जाएगा, में से एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, ठीक है। एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो इसका मिरर इमेज क्या, मिरर इमेज सॉरी, इट इनवर्स ऑफ ईच अदर है ना। एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे एक्सिस को टच कर रहा है, एक ऐसे टच कर रहा है, एक वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसमें भी ऐसे ही एक एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक वाई एक्सिस टच नहीं करेगा, छू के निकलेगा उसको, मतलब थोड़ा सा ऊपर से निकलेगा, टच नहीं करेगा, इट विल नॉट टच x axis or y axis, it will always intersect zero. Here it will always intersect zero, and here also it will always intersect zero. Next we will see graph of f of x is equal to 1/2n. Next we will see that graph of f of x is equal to x to the power 1/2n. n belongs to नेचुरल नंबर, वही है x to the power 1/2, x to the power 1/4, x to the power 1/6, x to the power 1/8, like odd terms वाला, सॉरी इवन टर्म वाला x to the power 1/2n. Likewise we will see the graph. इसका पहले इसका डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। पिछले x to the power 1/2 में देखे थे, डोमेन और रेंज दोनों सेम आ रहा था, इसमें भी सेम होगा, डोमेन और रेंज दोनों सेम होगा। कहाँ से क्या होगा, 0 से इंफिनिटी तक।
जीरो से इंफिनिटी तक डोमेन और रेंज दोनों सेम होगा। ग्राफ कैसा होगा, और इसका ग्राफ कैसा होगा, और सेम होगा अगर एक y इज इक्वल टू एक्स पे इमेज, मिरर इमेज सेम होगा, और उसके इनवर्स जो है ना, पिछले पेज पे डिस्कस किए थे, उसका इनवर्स इनवर्स भी क्या होगा, जस्ट इट इज अपोजिट टू इट्स लाइन, मतलब जस्ट एक ऐसे जा रहा था, एक एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा था, एक वाई एक्सिस को टच करके, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसमें इसका ग्राफ कैसा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, सपोज हमारा ये हो गया एक्स टू द पावर 1/2 का, 1/2 का सेम होगा ऐसे, या इसका क्या होगा 1/3, सेम ऐसे एक्स टू द पावर 1/5। ग्राफ का नेचर क्या होगा, मतलब जितना वैल्यू इंक्रीज करेगा जैसे उधर से इतना डिक्रीज करेगा, क्या होगा, जितना वैल्यू इंक्रीज करेगा उधर से नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा। वाई का वैल्यू हमें मतलब डिक्रीज करेगा, वाई एक्सिस को क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखा नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो सेम अगर y सपोज हम देखे, इसका तो देख लिया y टू द पावर 1/n, जो कि ये इवन नंबर है, मतलब इवन टर्म है, टोटल इवन टर्म है। तो ऐसे जा रहा है, अगर x टू द पावर n है, x टू द पावर n है, ये तो 1/n का हो गया, n का क्या होगा, तो n वाला ऐसे जाएगा, पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। फिर ऐसे like this, sorry, this will be like this will be like this, again this will be like this, again this will be like this ना, मतलब अगर अच्छे से बनाए तो ये वाला जस्ट स्मूथ बनेगा, स्मूथ जैसे होता है ना, ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ करके बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ करके बनेगा, ऐसे ऐसे करके बनेगा, यहाँ पे स्मूथ बनेगा एकदम। तो डोमेन और रेंज पता चल गया, इसका क्या होगा, एक्स टू द पावर 2n जो कि इवन नंबर है, तो उसका डोमेन और रेंज जीरो से इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा, यहाँ से जीरो से इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2n - 1, और टर्म वाला इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज दोनों सेम होगा, दोनों आर में बिलोंग करेगा, दैट विल बी आर, डोमेन और रेंज बोथ विल बी आर, दोनों आर में बिलोंग करेगा। जिसका ग्राफ कैसा होगा, पिछले में देखे थे एक्स क्यूब का ग्राफ, जैसे सपोज एक्स टू द पावर 1/3, एक्स टू द पावर 1/6, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 1/7, एक्स टू द पावर 1/9, लाइक दिस इट विल बी। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, पहले तो ये वाला हो गया, फिर ये वाला, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे जाएगा, ग्राफ स्मूथ बनेगा। इसका भी y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/5, समझ, एक्स y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, like this. Here it will be x to the power 1 by we can say x, because when it will become here now, it will become, this line will become straight, this line will be straight, y is equal to x, again we will see that x 1/3, 1/5, again we will see out here it will be something like this, y is equal to x to the power 1/7, again it will go down. Here it will be, same like suppose x to the power 1/3, x to the power 1/5, x to the power 1/7, like this. Again when you will this it is y is equal to x to the power 1/n form, in this form, when you will see that y is equal to x to the power suppose 2n - 1, here it is 2n - 1, like this, 1 by, here it is, y is equal to this graph is of y is equal to x to the power
1 by 2n minus 1. When you will plot the when we will plot the graph of y is equal to x to the power 2n minus 1, x to the power 2n minus, this is in pi form, x is x to the power 1 by 2n. Here it is y is equal to x to the power 2n. When we will plot the diagram, then it will like this, just opposite, like suppose x cube x to the power 5, again here it will be x to the power 7, again it will, this will come down, this will like this it will, again it will be x to the power suppose x to the power 5, x to the power 3, it will come here downward, x to the power 7, like this it will be means it will come near to the axis, near to the y axis, this will come near to the x axis, like this it is. So thank you for watching this video. Please subscribe this channel. If you like this channel, please hit the like button and share to your friend who is studying for JEE Mains, JEE Advanced. Thank you.